Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अशोक दास गुप्ता। अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। India has become an economic powerhouse because of the MSME sector, says Prime Minister Narendra Modi. Benchmark domestic stocks climb more than 1.5%. Sensex surges to regain 35,000 mark. Nifty reclaims 10,500 level. And rupee witnesses a big jump of 96 paise to 72 rupees and 49 paise against US dollar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एमएसएमई सेक्टर के कारण भारत आर्थिक शक्ति बना। घरेलू शेयर बाजार में आज जोरदार लिवाली, प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स फिर से 35,000 तथा निफ्टी 10,500 के स्तर से ऊपर उठकर हुए बंद। और $1 की तुलना में रुपए में आज जबरदस्त उछाल, 96 पैसे मजबूत होकर ₹72.49 के स्तर पर पहुंचा। In our top story, Prime Minister Narendra Modi has said that every GST registered micro, small and medium enterprise MSME will be given a rebate of 2% interest on the amount of a new loan or incremental loan up to 1 crore rupees. Announcing a series of measures during the launch of MSME support and outreach program in New Delhi this evening, Mr. Modi said the government has also decided to increase interest subvention on pre- and post-shipment credit for exports by MSMEs from 3% to 5%. He said the loan of up to 1 crore rupees will be sanctioned for MSME sector in 59 minutes. Mr. Modi said all the companies which have a turnover above 500 million will now be required to bring them on trade receivables e-discounting system so that MSMEs do not have problems in cash flow. He said due to reforms and landmark decisions taken by the government, doing business in India has become very easy today. Mr. Modi said the World Bank's Ease of Doing Business ranking, which was released just 2 days ago, is a proof of it. He said the government has done a lot of work at the ground level and improved the rules to make industry easier for MSMEs. He said the ease of doing business increases the simplicity and convenience, and MSME sector can get the best advantage from it. He said MSMEs are the second largest sector after agriculture. He said India has become the economic powerhouse today because of the MSME sector. Speaking on the occasion, Finance Minister Arun Jaitley said 6.5 crore MSME units in India are providing employment to 11 crore people. Just looking at what Prime Minister Narendra Modi has said, Ashokji, how do you see MSMEs as the economic powerhouse of India, not only in terms of productivity, but also creating employment and the incentive that the government is providing in the form of interest subvention for the growth of the MSME sector? That is the incentive being given to SME, micro and small enterprises sector. You see, for any developing economy and even advanced economy, take Japan for example, it is the small and medium enterprises that are the backbone of manufacturing. The big houses merely assemble those products together to make the final product. So for any country, this sector is the most important part of the manufacturing activity. So I think to an extent this sector has been neglected in our country. I'll give you a simple example. You know, when a big house, a large house goes for loans, working capital or whatever to a bank, it gets a interest preference because of their credit worthiness.
It is this sector, the small and medium enterprises and micro enterprises sector, that have to rush to banks, and because of the lack of creditworthiness, because these are tiny units, small units, medium scale units, they have to pay a higher interest rate. And when they don't get it from the banks, they rush to the NBFCs, the non-banking financial companies, where the interest rate is still higher. And since the NBFCs themselves are in a bad shape because of the liquidity crunch, it is only timely that this step has been taken. This sector does need incentives, and which is being given, as you said, 2% and 3% and 5% for pre- and post-shipment credit, which is very good. Once this sector develops, then you will see the manufacturing sector growing. And not only that, it is this sector that provides the largest scale of employment. So you just mentioned about the interest subvention for packing credit when it comes to manufacturing. There's also the mention of 1 crore rupee loan, which is to be sanctioned within 59 minutes. And how will that happen electronically? Well, electronically, obviously it is possible. It should not take even 59 minutes. You press a button and it is sanctioned. So that doesn't make sense. The point is, it is a great incentive which is long overdue that is being extended to this particular sector. अशोक जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि निर्यात से पहले और निर्यात के बाद ब्याज में जो छूट दी जाती है उसे 3 से बढ़ाकर अब 5% कर दिया जा रहा है। बिल्कुल वही मैंने कहा। हाँ, तो कुल मिलाकर निर्यात ओरिएंटेड यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां लाभ मिलने की उम्मीद वर्तमान जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनमें दिख रही है आपको? देखिए, हमारा जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो पार्ट्स जो बनाते हैं, कुछ छोटे कंपनी, मझोले कंपनी है, और वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि बड़े बड़े कंपनियां लाइक मर्सिडीज बेंज, ऑडाई और बाकी फोर्ड वगैरह, फोक्सवैगन, ये भी कुछ पार्ट्स हमारे जो कंपनी है उससे OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पे वो प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो ये अगर एक इंसेंटिव मिले एक्सपोर्ट के लिए, वैसे ही हमारा रुपया का जो दर था वो डॉलर के अगेंस्ट काफी आपका डिप्रिशिएट हो रहा था, तो उससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस तो बढ़ती है, पर प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये हो रहा है और बाहर की कंपनीज भी जानते हैं, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है डॉलर प्राइस में वो कम कर देते हैं, तो वो जो कॉम्पिटिटिवनेस का जो इंसेंटिव है वो नहीं मिलता है। ये जो इंटरेस्ट रेट सबवेंशन मिलेगा, ये एक एडेड इंसेंटिव होगा एक्सपोर्ट्स के लिए भी। रोजगार की दृष्टि से ये जो माइक्रो सेक्टर है, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, टाइनी आपने कहा था, इनमें से खास तौर से कौन से चुनिंदा ऐसे क्षेत्र माने जा सकते हैं जो अभी के हालात देखते हुए, जब हालांकि आज तो खबरें हैं कि कारोबार विवाद सुलझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे में हमारे लिए निर्यात की संभावनाएं किस क्षेत्र में आपको दिख रही हैं? देखिए, वैसे हमारे जो निर्यात होते हैं, ऑटो पार्ट्स जैसे मैंने कहा निर्यात होता है, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम है, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, लेदर गारमेंट्स, अपैरल्स, लेदर फुटवेयर, ये सब हैं, मशीन टूल्स हैं। तो हमारे निर्यात आप देखेंगे ज्यादातर कुछ लेबर इंटेंसिव, जहां एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, उसी का एक्सपोर्ट होता है। तो इससे सॉफ्टवेयर को अलग छोड़िए, वो तो सेवाओं का निर्यात है, वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये सब जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें यही सब प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट तो जरूर बढ़ा है, क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं ये ज्यादातर ऑटोमेटेड नहीं है, फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है, और इसमें कारीगरी की जरूरत होती है।
इसीलिए इससे एम्प्लॉयमेंट भी काफी रहती है। यानी कुल मिला के हम उम्मीद करें कि अभी जो लगातार अभियान चलेगा, लगभग 2 महीने तक इस क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा, एमएसएमई सेक्टर पर, और उदारता से ऋण मिल सके, उसका व्यापक लाभ देश की जनता को मिल सकेगा, उद्यम आगे बढ़ सके। आइए खबरों का सिलसिला भी हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं शेयर बाजार की ओर। अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी संबंध में सुधार होने और समझौता किए जाने के लिए बातचीत की संभावनाओं से वैश्विक बाजारों में आज तेजी देखने को मिली है। इसका अनुकूल असर घरेलू शेयर बाजार पर भी काफी अच्छा देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटे हैं। डॉलर की तुलना में रुपए में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इन सब कारणों से घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों ने आज जोरदार लिवाली की और प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 580 अंक यानी 1.68% बढ़कर फिर से 35,000 के स्तर से ऊपर उठता हुआ 35,012 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 173 अंक यानी 1.66% की बढ़त लेकर 10,500 के स्तर से ऊपर उठता हुआ 10,553 पर बंद हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में लिवाली तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.78% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.76% मुनाफे में रहा। The market today climbed in line with global stocks as crude prices fell and the rupee extended gains to touch a one-month high. Global shares rose on hopes of a trade agreement between China and the US. Weakness in the IT shares capped gains. Benchmark domestic stocks logged robust gains of more than 1.5%. Amid strong positive global share markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange gained 580 points, or 1.68%, to regain 35,000 mark to end at 35,012. The Nifty at the National Stock Exchange also jumped 173 points, up or 1.66%, to cross the 10,500 level to close at 10,553. Among secondary barometers, the BSE Mid Cap Index rose 0.78%. The BSE Small Cap Index rose 0.76%. The market breadth indicating the overall health of the market was strong on the BSE. 1,611 shares rose and 1,054 shares fell. A total of 143 shares were unchanged. Among sectoral indices on the BSE, the auto was up 4.05%, metal up 3.04%, and oil and gas up 2.46%, outperformed the Sensex. IT down 1.32%, tech down 0.96%, and healthcare index down 0.48%, underperformed the Sensex. Ashok, now what kind of, what's your view of the market? Plenty of short covering with the markets going up by 580 points, and we saw the select sectoral indices, auto, metal, oil and gas, going up by as much as 3 to 4%. Why is there such buying interest in these three specific sectors? See, particularly, Arjun, you must have noticed that over the month of October, the markets have been correcting majorly. In fact, it has been a collapse. On days, it has moved down by 700 to 1,000 points, as far as the Sensex is concerned. So this time, and that was due to negative sentiments, not only at home, but globally. If you see, as far as the rupee is concerned, the rupee had been depreciating against the dollar. Huge outflows by FPIs, foreign portfolio investors. I think in October it was something like 35 or 38,000 crores that has flown out of the country. Now, obviously, they are not booking losses. They are booking profits and taking them back home for the month of November, December, where they have to settle their accounts and show shareholders that this is the profit they have made. This has been happening every year, annually. But that apart, there were other major concerns. One is the US-China trade war, which is again, as you just read out, there are chances of those getting resolved, but I mean, no indications as such. So those are remote. That was a positive thing. The most important part was the oil prices fell. And why did they fall? Because it is now expected that global growth will not be as much as was expected. It will be lower. And the demand for oil has fallen, whereas supply has risen. So obviously it's a demand-supply mismatch and prices have to fall. Now, this is benefiting India particularly.
India had to pay through its nose when oil prices had been going up. There were problems of current account deficit. I'm not saying that the problems are over, but for the moment, it is pretty positive. The market has obviously reacted to that. And look at the sectors that have gone up. It is the auto sector, it is the oil sector, which is again going to benefit, and metals, infra, etc. Which are the sectors that have fallen? Now, see that when the rupee was depreciating, it is the IT sector that was gaining. It was the pharma sector that was gaining. The moment rupee has appreciated against the dollar, because the dollar has weakened, you find that the IT sector and the pharma sector shares are falling. So this is a day-to-day activity, and there were obviously positive global cues. But this does not mean that the worst is over. The moment markets rise, those who are shaky, who do not want to keep their investments for 5 to 7 to 10 years, would like to book profits. So the moment they find that, yes, there is some profit for them, you might see, I'm not saying certainly, you might see that tomorrow the market reacts because profit taking takes place. So there is opportunity-driven trading taking place right now. Is it the mutual funds who are doing the buying and the FIIs who are leaving the market? It could be the mutual funds which are buying. It could be the domestic financial institutions that are buying. And in any case, whenever there is a major correction and you have a series of daily trading day corrections, that is and I've been saying this on Market Mantra, that is the best time for long-term investors to go in and purchase the stocks that they like, which they feel are good, fundamentally strong stocks for keep for 5 to 7 to 10 years. अशोक जी, आपने बहुत सारी बातें एक साथ कह दी हैं कि बाजार में जो एक महीने से हमने गिरावट का दौर देखा या लिवाली का जोर देखा, वो कभी वैश्विक कारक रहे, बाहरी जो परिस्थितियां थी उनका असर रहा, और अभी भी क्या हम ये मान के चले कि बाजार बॉटम आउट हुआ या अभी भी आसार हैं कि फिर यहां से वापस जाने के? देखिए, मैंने जैसे कहा, आज जो मार्केट चढ़ी है करीब 700 पॉइंट के करीब, 580 पॉइंट्स बीच में इंट्राडे 700 पॉइंट चढ़ी थी जी, तो 580 पॉइंट्स हाई क्लोज हुआ है. कल अगर मार्केट गैप अप से ओपन करता है, मतलब और चढ़ी हुई मार्केट होती है, हो सकता है कि इंट्राडे में मार्केट थोड़ी नीचे जाए, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग जरूर आएगी. और वो प्रॉफिट टेकिंग अगर आती है, दैट विल बी अ गुड टाइम फॉर people to go in for purchases again, क्योंकि वो फिर एक करेक्शन होगा. दूसरी बात, अब डोमेस्टिक अगर देखें, ग्लोबल एनवायरनमेंट तो थोड़ा सा सुलझता हुआ नजर आ रहा है. डोमेस्टिक अगर देखें, नवंबर दिसंबर में इलेक्शंस हैं, स्टेट इलेक्शंस हैं, तो अगर कोई भी थोड़ा अनसर्टेनली लगता है कि कोई इनकम्बेंट स्टेट में चांसेस लग रहा है कि इनकम्बेंट स्टेट में वो वापस नहीं आ रहे हैं, और ये जो अनसर्टेनिटी है, मार्केट कभी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करती है. और इससे आप देखेंगे कि जब भी मार्केट चढ़ने की कोशिश करेगी, प्रॉफिट टेकिंग आएगी, क्योंकि लोग वुड लाइक टू कीप देयर मनी इन देयर पॉकेट्स रादर देन लीव इट आउट इन द ओपन जी. तो ये जो बिकवाली और खरीदारी की जो फेज है, ये मेरे ख्याल नवंबर जरूर चलेगा, जब तक इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आते हैं. जरूर बीच बीच में पॉजिटिव, तेल के दाम अगर और गिर जाते हैं, रुपया और थोड़ा मजबूत होता है, आप देखेंगे मार्केट में थोड़ी और उछाल आएगी, पर बाउंस ऑफ प्रॉफिट टेकिंग जरूर होगी. Ashok, we also saw the mid-cap and the small-cap go up by as much as 78 basis points in both these indices, with the Sensex going up much higher at 1.66%. And our opening story was also on the growth and development of the MSME sector. Exactly. And how So that was being offered. That was the reaction. You see, it is such a good step that is being taken after a long, long time that the market has reacted to that. Do you think there's a future for any of these mid-cap, small-cap companies becoming large-cap in terms of market capitalization because
of the aid and support given by the government and improvement in the market? See, any medium-scale company can become a large company, but the problem with our country has been a medium company would not like to grow vertically. They like to grow horizontally. They'll set up another company because there were certain incentives that were given to small and medium-scale enterprises. So they prefer to stay small, but they do good work. Like exports, if you take, at least 40% of the country's exports are from the small and medium-scale sector. It provides the largest employment to the country. It is not the large houses that provide the bulk of employment. It is the small, tiny sector industries that provide employment to the people. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी विवाद घटने की उम्मीदों से एशियाई शेयर बाजारों में आज अच्छी तेजी बनी। कल अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कारोबारी मसले पर चीन के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बातचीत सकारात्मक रहने संबंधी खबरों से बाजार में अनुकूल वातावरण बना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी थी कि दोनों देशों के साथ बातचीत अच्छी दिशा में बढ़ रही है। इसके बाद कच्चे तेल के दामों में कमी देखने को मिली और शेयर बाजारों में जबरदस्त लिवाली का दौर भी देखने को मिला। निवेशकों की जोरदार खरीदारी से आज हांगकांग का हेंग सेंग सूचकांक 4% से अधिक लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 3.4% और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2.6% की वृद्धि देखने को मिली। जापान का निक्केई सूचकांक 2.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.9% मुनाफे में रहा। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक तेजी बनी हुई थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का फुट्सी 100 0.7%, फ्रांस का कैक 40 1.3% और जर्मनी का डेक्स 1.5% से अधिक ऊपर कारोबार कर रहा था। Do you feel that maybe there was short covering in the Asian markets as well because the markets have gone up as much as 4% if you look at Hong Kong's Hang Seng? Possible. Those who are in forwards and they find that the market is turning the other way, obviously there would be short covering. Even in our market, see, all the trade that takes place is not delivery based. Obviously the rise is due to short covering also. So settlement based transactions. Well, clearly the US and China will come to an agreement. You feel confident that it will happen and the way the markets are reflecting this? See, this has happened before also. Positive vibes were there, but it didn't turn out to be true. So, which is why I'm saying that if tomorrow they find that no, there is some negative vibe, US-China trade war is not getting resolved immediately, you'll find a correction in the market, not only here, but even globally. Well, let's see what President Trump has to say about this. US stocks rose for a third straight session yesterday as President Donald Trump said trade talks with China were moving along nicely, reviving hopes that the two countries can resolve their trade dispute. Adding to the upbeat mood, the latest round of results from companies was mostly positive. The Dow Jones and the Nasdaq Composite Index both gained 1.1% and the S&P 500 gained 1.8%. Moving on to more news. पहले हम रुपए की स्थिति पर नजर डालते हैं, उसके बाद अन्य क्षेत्रों की ओर चलेंगे। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 96 पैसे मजबूत हुआ, 72 रुपए 49 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। कल ये 50 पैसे मजबूत होकर 73 रुपए 45 पैसे पर पहुंच गया था। रुपए में हम 2 दिनों से अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। कल 50 पैसे और आज 96 पैसे, यानी लगभग बिल्कुल आप देखिए करीब 1 रुपया का अगर एप्रिसिएशन होता है वो काफी मायने रखती है। जब एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जनरली 2 पैसे 6 पैसे 8 पैसे होता था, ये बहुत बड़ा जो हुआ है, इससे लगता है डॉलर एक्चुअली वीकन हुआ है, जिस वजह से ये अंतर आया है। Let's now move on to the oil market. Oil prices today fell on course for its fourth consecutive week of decline amid rising crude supply. Brent crude prices in intraday trade today were trading around $72.95 per barrel, while WTI prices were at around $66.40 when reports last came in. And on this, we're joined by oil expert Shri Narendra Taneja of the South Asia Bureau Chief of Upstream. Narendra ji, very warm welcome to your Market Mantra. Thanks for having me. Narendra ji, seems to be a day for good news. The rupee has
fallen today in the foreign exchange market, many citing because of the drop in oil prices. Do you expect oil prices to recede further? Yeah, I think on short-term basis, probably the next week or couple of weeks, oil prices may move southward. Let's not forget one thing, that whatever the trend we are witnessing, it also has something to do with the congressional elections in the U.S. Typically, whenever there are elections in America, the oil prices start moving mysteriously southward. We don't know why it happened, how it happened, and everything. There are various theories. But I think in a couple of weeks, probably you're going to see that oil prices may start climbing up again. But at least for enough couple of weeks, probably crude oil prices are going to move in the direction of south, which is of course a very good news for big importers such as India. But as I said, that in terms of supply and everything, whatever we're witnessing, there is no guarantee that this will sustain. And a couple of weeks from now, we'll see what happens. So your assessment is that this is a short-term a price change that we are seeing right now, specific to India. How do you see the volume of supply to India being affected now that the sanctions on Iran is taking place? Well, I think, first of all, there's no confirmation yet, but even let's say that, we import roughly 10% of our total requirement in terms of imports from Iran. But in case the sanctions are there, or we find difficult to charter ships in order to bring Iranian ships, or there are some insurance and payment issues, then that's a different story. But otherwise, we can always find oil from other sources. Supply is not a constraint. The main thing is that a couple of our refineries are designed for Iranian crude. Iranian crude is slightly cheaper, and we get Iranian crude on better terms in terms of, the credit and also freight. So there are some attractions. But, my own assessment is that even if there is a waiver from the U.S., we have to wait till Monday. Even if there is a waiver, but imports from Iran will still come down for want of ships and for want of reinsurance facilities. तनेजा साहब, अगले 6 महीनों की हम बात करें तो तेल के दाम किस हद तक ऊपर उठते या नीचे आते दिख रहे हैं आपको? देखिए, 6 महीने की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात विंटर की होती है, जाड़े के मौसम की होती है. हमने देखा है जाड़े में तेल की खपत ज्यादा होती है, और अगर जाड़ा बहुत कड़ा जाड़ा पड़ जाता है, जैसा लोग कह रहे हैं शायद इस बार यूरोप, अमेरिका, कनाडा में होगा, अगर ऐसा होता है तो फिर कीमतें बढ़ जाएंगी. लेकिन अभी तक जो खबरें हैं उसके हिसाब से लगता है कि जो कीमतें आज जो हैं इससे तो निश्चित रूप से बढ़ेंगी. अमरीकी चुनाव खत्म हो जाएंगे, कीमतें ऊपर वापस जाना शुरू हो जाएंगी. लेकिन जाड़े में कैसा जाड़ा पड़ता है उस पर डिपेंड करेगा. लेकिन यह है कि सस्ता जो तेल का दौर हमने पहले देखा था, 2 साल पहले, 1 साल पहले या 10 महीने पहले, वो वापस फिलहाल जल्दी आने वाला नहीं है. इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए कि तेल की कीमतें जो हैं वो ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर के $70 और $80 जो है इसके इर्द गिर्द घूमेंगे, ऐसा लगता है, कम से कम इस जाड़े के दौरान. Well, thank you so much, Narendra ji, for giving us your views on the oil market. That was Narendra Taneja ji from South Asia Bureau Chief of Upstream. आइए आगे बढ़ें और चलें सर्राफा बाजार. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने के मूल्य में पिछले 3 सत्रों में जारी तेजी आज थम गई और इसके दाम 150 रुपए घटकर 32,630 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए. कारोबारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख और घरेलू बाजार में मांग घटने से सोने के मूल्य में आज नरमी देखने को मिली. उधर सिक्कों के लिए मांग अच्छी खासी निकलने से चांदी 310 रुपए उछलकर 39,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य 0.03% घटकर $1,235.50 प्रति आउंस पर आ गया, जबकि चांदी भी इतनी ही कम होकर $14.82 प्रति आउंस रह गई. अशोक जी, हम समझना चाहेंगे सोने के प्रति अपने देश में बहुत अधिक चाहत होती है. ऐसे में त्योहारों का सीजन है तो लोग सोना और चांदी के सिक्के खरीदेंगे ही, निवेश करेंगे ही, लेकिन कुल मिलाकर निवेश की दृष्टि से यह कितना लाभप्रद होता है? देखिए, निवेश के तौर पे गोल्ड अभी उतना लाभदायक नहीं है, और ये हमने सिर्फ पिछले 1-2 साल से यही देख रहे हैं कि जब से म्यूचुअल फंड में बढ़ोतरी हुई है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है. फेस्टिवल सीजन में कुछ बढ़ता है, पर लास्ट फेस्टिवल सीजन में भी स्टॉकिस्ट ने लिया तो, पर उसके बाद प्राइसेस नीचे आए. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अशोक जी. शुक्रिया. And before we close, a reminder of the headlines. India has become an economic powerhouse because of the MSME sector, says Prime Minister Narendra Modi. Benchmark domestic stocks climb more than 1.5%. Sensex surges to regain 35,000 mark. Nifty reclaims 10,500 level. And rupee witnesses a big jump of 96 paise to 72 rupees and 49 paise against the US dollar. That's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
Market Mantra. Market Mantra.